हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है BLS ई सर्विसेज। दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ BLS इंटरनेशनल इन इंडिया। BLS इंटरनेशनल इज आल्सो अ लिस्टेड कंपनी। BLS इंटरनेशनल होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 68% इन BLS ई सर्विसेज। BLS ई सर्विसेज का IPO लास्ट ईयर लाइक 2024 में फरवरी के अराउंड आया था। सो IPO प्राइस से जो शेयर है कंपनी का वो मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है। सो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग मे बी लाइक हाउ द कंपनी लुक्स एंड व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी, हाउ द company is placed. And before I start, like a very happy very happy Holi to all of you. And whoever is in North, like they would have been celebrating it. And अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आई नो मैंने बहुत जल्दी बोल दिया बट इट्स बीन लाइक quite a long and subscriptions number was stagnant, so I thought of calling it in the beginning of the video. So let's start. Yeah, so what does BLS E Services do? तो BLS E Services का अगर आप देखेंगे, सो जो मेजर उनके ऑपरेशंस हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, आई वुड से लाइक the operations can be divided into three parts like e-governance services industry, business correspondence industry, or and assisted e-services industry. नाउ अब ईच ऑफ दीज में क्या क्या होता है हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरी प्रेजेंटेशन में। लेकिन उसके पहले जस्ट थॉट कि लाइक दीज आर द थ्री आर्म्स ऑफ द बिजनेसेस। नाउ उनमें क्या होता है यहाँ पे जो अगेन उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज में ये जो हमारे जितने भी जो गांव वगैरह के लाइक जो दूर के हमारे जो नॉन अर्बन एरियाज हैं, यहाँ पे हमारे रूरल एरियाज वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो हमारे टीयर 3 टीयर 4 सिटीज होते हैं जहाँ तक हमारे बैंक्स एंड हमारे जो यहाँ पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है या फिर लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है वहाँ पे। सो दे ओपन दे स्टोर्स देयर एंड देन दे हेल्प द पीपल फॉर दीज सर्विसेज व्हिच कैन बी लाइक, आप अगर देखेंगे ई कॉमर्स सर्विसेज, व्हाट आर द ई कॉमर्स सर्विसेज, वी विल डिस्कस इन डिटेल हमारे आगे के प्रेजेंटेशन में। मोबाइल और डीटीएच अगर आपको रिचार्ज कराना है, ट्रेन टिकट्स आपको बुक करने हैं, इंश्योरेंस अगर आपको किसी को कराना है, सो एंड द पर्सन डजंट नो कि भाई कैसे कराना है क्या कराना है, सो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। पैथ लैब सर्विसेज ऑल्सो नाउ दे हैव स्टार्टेड कंसल्टेंसी के लिए डीमैट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है। सो ऑल दीज सर्विसेज नाउ दे प्रोवाइड फॉर द इन द एरियाज जहाँ पर आपके पर्टिकुलर कंपनीज रीच आउट नहीं कर सकते, लाइक आपके बैंक्स अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करे तो बैंक्स नहीं पहुंच सकते, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स में अगर किसी को पैन के लिए अप्लाई करना है, किसी को आधार के लिए अप्लाई करना है, राइट, या फिर किसी को अपने दूसरे सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है, सो ऑल दो सर्विसेज के लिए BLS ई सर्विसेज इज दे, लाइक दे हैव देयर स्मॉल स्मॉल सेंटर्स देयर जिनकी गवर्नमेंट से इनका लाइसेंस लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लाइक मल्टीपल कंपनीज कैन टेक द लाइसेंस, BLS ई सर्विसेज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज जिन्होंने अपना लाइसेंस वहां से ले रखा है, एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट कि भाई अगर आपको मेरी फ्रेंचाइजी चाहिए तो दिस इज द फ्रेंचाइजी, और फ्रेंचाइजी ओनर से जो भी फी लेते होंगे अपफ्रंट फी, एंड देन द बैंक्स वगैरह के जो भी आपके पैसे भेजने हैं या दूसरे काम करने हैं उसके लिए पर ट्रांजेक्शन बेसिस पे दे चार्ज अ फी, राइट। सो एज ऑफ नाउ लाइक ये मैंने इनके दिसंबर के प्रेजेंटेशन से लिया है, 136,000 इनके जो हैं वो टोटल टच पॉइंट्स हैं, 1000 BLS स्टोर्स हैं, 123 बैंक्स या NBFC के साथ इनका टाई अप है, 130 मिलियन ट्रांजेक्शन्स इन्होंने लास्ट ईयर किए हैं। और अगर मैं देखूं उन सारे ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू मिलाकर टोटल इट्स अप्रोक्सीमेटली 72,000 crores, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर, एंड 41,000 जो है वो इनके बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं, राइट। This is a brief history of the company. Like 2016 the company started, then 2018 they acquired Starfin India Private Limited, 2022 they acquired Zero Mass Private Limited, 22 में इन्होंने एक और एक्विजिशन किया विच इज लाइक इन प्रमोटर ग्रुप की एक और कंपनी विच इज लाइक BLS केंद्र प्राइवेट लिमिटेड, बट इट वाज एन इंडिविजुअल एंटिटी जो कि इनकी नहीं थी, so they acquired that in a share swap, like equity swap or share swap agreement, they acquire that, right? And then 23 obviously आपको पब्लिक जाने से पहले प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में चेंज करना पड़ता है, 24 they came up with the IPO on the like came up with the IPO on NSE and BSE, दो exchanges पे, and they also acquired ASPL which is a private which is a company जो कि मेजरली जो कि बैंक्स वगैरह को लीड्स एंड ऑल प्रोवाइड करती है उसमें काम करती थी, लोन्स के लिए जो लीड देती है। So now they have a lot of data, and then they thought of, okay, we should enter into this particular business. That's how they got entered into this.
if my memory serves me right, so they paid somewhere around 190 crores to 200 crores for acquiring this particular company. So that's how it has happened. Uh, Now going forward, this is like BLS International, जो इनकी parent company है, that still holds approximately 68.9, which is like 69% stake in BLS E Services. Then BLS E Services जो है, that is having uh, Starfin 100% zero mass, 100% business. BC is business correspondent, so they are the business correspondent business. And yeah, this is the ASPL जो नाम है थोड़ा आदि Fidelis, which is like a bit tough to pronounce if I have pronounced it correctly. 57% इनका यहाँ पर स्टेक है एंड 100% ऑब्वियसली BLS केंद्राज में है जो कि इन्होंने इक्विटी शेयर स्वैप में लिए थे. Right now, what they do in e-governance services industry, as I already told you, कि जितने हमारे जो बैंक, सॉरी नॉट बैंक, जितने हमारे गवर्नमेंट्स के काम होते हैं उन गवर्नमेंट्स के काम के लिए दे हैव लाइक गवर्नमेंट उन कामों को आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि उनके एम्प्लॉयज ये सारे काम, लाइक अगर किसी को पैन कार्ड बनवाना है, किसी को आधार बनवाना है, और दूसरे भी छोटे छोटे काम हो सकते हैं, वो दो कामों को गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है. सो दे आर ई गवर्नेंस है. इसमें अगर आप देखेंगे इस चार्ट में, सो इट इज मोर ऑफ क्लियर आपको कि आपको क्या है. अगर आप देखें ई गवर्नेंस सर्विसेज, एज आई टोल्ड यू यहाँ पर, या ई गवर्नेंस सर्विसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी को अपना कार्ड वगैरह बनवाना है और ऑल दोज थिंग्स दे हैव टू डू, सो दे कैन डू इट फ्रॉम वेयर, सच एज लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट के, फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर्स, so many departments are there. They what government does, government outsource these businesses to the other like third parties, and then those third parties they charge a particular commission from the government. So this is how दिस बिजनेस वर्क्स, राइट. देन बिजनेस करस्पॉन्डेंट बीसी जो हमने पहले बोला था, जिनके लिए इनके दो कंपनीज भी उन्होंने एक्वायर किए थे पीछे में, जो मैंने आपको दिखाए थे, स्टार फिन एंड द अदर वन. सो व्हाट दे डू इज लाइक दे ट्रांसफर बैंक money for the customers, and they have do domestic remittances, which are like money transfer only, loan deposits, fund transfer, flexi recurring deposit अगर आपको कराना है, किसी को टर्म डिपॉजिट कराना है, माइक्रो इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस हमने पहले भी बात की थी, माइक्रो पेंशन, बिल पेमेंट. एक्चुअली दिस शुड बी असिस्टेड ई सर्विसेज ऑल्सो. तो असिस्टेड ई सर्विसेज में आपका बिल पेमेंट भी आएगा, पैन कार्ड यहाँ पर भी है. सम ऑफ दीज सर्विसेज कुड बी ओवरलैपिंग, इट इज लाइक दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग बिल्ट आफ्टर रीडिंग द बिजनेस. IRCTC के टिकट कराना, या फिर e-learning, gold loan, all those things are there, right? The digital stores, it is said that कि जो retailer based है, it is more of कि इसमें एक बंदा कर रहा है. I'm not sure कि डिजिटल और डिजिटल वाले में जो है आपको वो कोई पर्सनलाइज बंदा नहीं होता. That's what I read and understood about the business. However, I believe कि दोनों में एक एक बंदा तो होता ही होगा. It's more of same. That's what I felt like after reading. And so these are the business like कि कंपनी करती है, गवर्नमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है. जो दूसरे भी हमारे फाइनेंस कंपनीज है छोटे, उनके लिए यहाँ पर बैंक्स या एनबीएफसी खुद नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पर, ये जाकर उन कंपनीज के लिए काम करते हैं, उन बैंक्स के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए जो भी है. एंड देन दे टेक फ्रेंचाइजी फ्रॉम बैंक्स, बैंक से जाके एग्रीमेंट करते हैं या फिर गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करते हैं. एंड फिर अपने जो छोटे छोटे फ्रेंचाइजी दूसरों को देते हैं, जहाँ पर उनसे एक वन टाइम फीस या फिर जो भी पर्टिकुलर हर एक ट्रांजेक्शन का होगा टोटल जो भी, उसमें थोड़ा वो उनको देते हैं, थोड़ा खुद रख लेते हैं, राइट. एंड देन दिस इज अ मोर ऑफ की लाइक इनका एक बार बिजनेस का लाइक आपके नंबर ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड क्या हैं, और सेमी रूरल में कितने हैं, अर्बन कोड में कितने हैं, ऑल दो सर्विसेज विच आर द मेजर. इनके पार्टनर्स जो है SBI जो है, मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो इनका बैंकिंग वाला है उसमें अप्रोक्सीमेटली 60% जो है वो SBI से आता है. उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC, ऑल दो मेजोरिटी ऑफ दीज आर द गवर्नमेंट बैंक्स. एंड देन दिस इज अ रीजन जहाँ पे इनका है. सो मेजरली आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में एंड सेंट्रल इंडिया में, लाइक साउथ पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दे आर स्टिल नॉट प्रेजेंट वहाँ पर. सो दैट इज समथिंग यू कैन सी. Investment rationale, first time I saw some company like giving itself like investment rationale, why should you invest in our company? So this is like asset light model, cross selling and upselling opportunities कर सकते हैं, diverse sources of revenue, negligible customer acquisition, all those you can read by yourself also. So these are the like company, as per the company, these are their major the reason, yeah, जो आपको invest करना चाहिए. Then I thought of showing cash flow statement as always we see in our videos.
So the good thing is like company generates cash even after I would say company generates cash अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो before working capital change also and after working capital change also although इट्स लाइक कंपनी का बिजनेस में थोड़ी वर्किंग कैपिटल इनको चाहिए इस business में विच इज लाइक इतना बिजनेस में लिए स्टिल दे वुड नीड सम ऑफ द वर्किंग कैपिटल एंड विच इज मोर ऑफ द रिसीवेबल के पार्ट्स में जा रही है जो कि एज यू नो कि हमारा क्योंकि कंपनी का जो है वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस है जहाँ पर ये गवर्नमेंट बैंक्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं सो ऑब्वियसली रिसीवेबल्स जो है वो अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रिसीवेबल्स विल इंक्रीज वहाँ पर so that is one of the reason but still company is making money because it's more of an asset light business वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है so if someone goes to screener and checks for the equity that I thought of just putting it at the start also so the equity is like someone can see oh ROE is 11.6% while the business is asset light but company has approximately 300 crores of cash in the books in the balance sheet जिसकी वजह से कंपनी का ROE जो है वो कम हो लग रहा है आपको अगर आप सेम चीज ROCE में देखेंगे I have taken a 10 years वाला और 5 years वाला which is like same because company got established itself 2016 में एस्टेब्लिश हुई और उसके बाद का पब्लिक डेटा और भी कम है सो ROCE जो है वो 30.8% है विच इज लाइक indicating again that this is an asset light business and you don't need much of the cash for doing the business right then the next thing I thought of discussing is if you see here in the December quarter if someone goes there so it will look like that December 23 the revenue was 72 crores and no, December 24, the revenue increased to 128 crores. However, ये जो 72 करोड़ से 128 करोड़ का है इसमें 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंट्रीब्यूशन लाइक 50 करोड़ नॉट 50% 50 करोड़ से ज़्यादा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम ASPL विच इज़ लाइक द कंपनी जो हमने कहा था ये जो बैंक्स के लिए लीड्स एंड ऑल जनरेट करती है दे एक्वायर दैट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर सो उसमें 50 करोड़ का है सो अगर मैं वैसे देखूँ अगर मैं इसमें 50 करोड़ हटा दूँ तो कंपनी वुड हैव जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ ऑफ रेवेन्यू कंपनी वुड हैव जनरेटेड व्हिच इज लाइक ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो है फ्लैट है सो ऑल्दो दिस बिजनेस इज लाइक वेरी मच asset light and all everything is there but this business is like the company is not able to grow the business organically that's what we can see here majority of the growth that has coming inorganically and company still has books cash in the books so company is saying like we will be acquiring we may be acquiring any business further if we get a chance so those kind of companies like आप अगर देखोगे कि which majorly are dependent for on the acquisitions for the revenue growth uh, I believe I'm not sure, but yeah, those kind of companies, they are not a very good sign for the companies. Like if they are increasing their revenue majorly from inorganic medium, not the organic ones. So that's how I would say. Uh, yeah, now the key points I just thought of discussing. Company has more than 300 crores of cash, जो मैंने आपको already बता दिया है और 60% of the business in the banking services with like BC business correspondent वाला जो है वो SBI से आता है. So SBI is they have like concentration in the customer. If one of the customer that is SBI goes, so company को अपने revenues में काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा की कॉम्पिटिटर्स अगर मैं देखूँ कंपनी के तो वैकरंगी है वैकरंगी लाइक is a very infamous company in Indian market. People who would have been aware, they would have been aware. Others who don't know about the Vekrangi, they may Google about Vekrangi is fast. CSC e-governance services. This is also a company which provides the same kind of services, but it's a private limited company. Spice Money. This is a UP-based company which also does which is also into the same business. Right, company would grow its business through the acquisitions. I guess मैंने spelling गलत लिख दिया through acquisition लिख दिया instead of through the acquisition. So Manasik there. So company would grow its business through acquisitions. That's what I already told you. Total revenue increase in 2024 50 crores, which is from ASPL. If I can read this name, I would add the Fidelis. I would say ASPL is easier for me. So company ने अपना जो 50 crores का revenue है वो ASPL से आया है. So the
फ्लैट है, द रेवेन्यू जो है उनका ईयर ऑन ईयर जो है वो फ्लैट है, कंपनी इज नॉट एबल टू ग्रो द रेवेन्यू. So this is what I thought of this discussing. It's a asset light business, no doubt, and it looks like business can grow if I look from a like uh, from a height. If I look at the business looks like it can grow, but somehow the company is not able to grow. So I would say like there's a competition in this particular business, and other companies they may have taken the share of the share in the market. That's what my assumption is, because if you look at those businesses, like the people in the privileges and all, this looks like the business should grow, because still there are a lot of people in India who would require someone's help to do these transactions. However, as the education level and as the awareness level in the customers goes on, the bank's apps themselves are very much interactive, and they are like very much user friendly, so the people can use them. Now the banks will also push the apps into the multiple languages also there. So that is also a counterpoint, if I say, to this all the thesis that these businesses can grow very fast and all. So this is how I just thought of discussing about the business. Rest is up to you. The ratios look good, but the revenue company is not able to grow. The share price is corrected 50%. Does it look attractive? Does it look not attractive? Maybe. That's what I cannot comment on that. This is on the individual how they would judge the business. But the company's parent company that has done good in the that they provide the visa for the different countries. Like they have those they do take those contracts from those particular countries, and then they provide the visas on those particular countries. So that parent company has done well. But BLS e-services, can it repeat it? Can it not repeat it? Only the time will tell. And अगर आपको लगा हो कि वीडियो अच्छा है या फिर हमने कुछ आपको वैल्यू ऐड किया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू अस फॉर रीचिंग मोर एंड मोर पीपल. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक. उसके पहले संडे को लाइव सेशन होगा, अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन में आए जुड़ने के लिए. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू एवरीवन.